है तो एमटीएम 10,000 चला गया, मार्जिन 90,000 चला गया, तो नेक्स्ट डे एक्सचेंज से कॉल आ जाएगा ब्रोकर से, यार फंड करो नहीं तो वो वन लॉट को स्क्वायर ऑफ कर देते। तो अल्टीमेट ऑप्शन सेल करके अगर लिमिटेड कैपिटल है, हाउ मच विल यू लूज एट मोस्ट? 10,000 rupees approximately. I am telling you about the mathematics of an option. Are you with me? तो मतलब ऑप्शन सेल करके नुकसान हो सकता है 10,000 का, ऑप्शन बाय करके नुकसान हो सकता है 1,00,000 रुपए का। अभी आप मुझे बताओ, एक बाजू 1,00,000 की रिस्क है तो रिटर्न बनेगा भी तो मे बी 10,000 15,000 का बन सकता है, लेकिन 1,00,000 की रिस्क तो है अगर आप स्टॉप लॉस के बिना काम कर रहे हो और ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का। और अगर आप पुट ऑप्शन पे काम कर रहे हो, आप सेलिंग ऑप्शन पे काम कर रहे हो, पुट हो या कॉल हो, और अगर आपका मार्जिन ही 90,000 चला गया, 10,000 का एमटीएम लॉस होगा, तो एक्सचेंज आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा ना पोजीशन। तो मतलब आपका 10,000 के सामने अगर आप 2,000 रुपया बना सकते हो ऑप्शन, 3,000 रुपया बना सकते हो ऑप्शन सेल करके, मैं नहीं कह रहा 10,000 आप पूरा लॉस करो, बट where do the mathematics looks much more preferred? Now I will add you one more thing. Option buyer has 70% chances of losing money, 30% chance है option buyer will make money. और अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल किया, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी इज 85%। विथ प्रोबेबिलिटी, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 85% का प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन सेलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ओटीएम विनिंग प्रोबेबिलिटी, और बायर के लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी 25 to 30% है। The risk in option buying is you can lose your entire capital. The risk in option selling is if you have a limited capital. अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है और आप उसको ओपन रख दिए तो बहुत सारा लॉस हो सकता है वहां पे, there is no second thought. बट अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो वहां पर रिस्क भी लिमिटेड ही होगा, बिकॉज उसके ऊपर पोजिशंस अलाउ नहीं करेगा एक्सचेंज। सो इन अ वे, फॉर पीपल हैविंग लिमिटेड कैपिटल टेकिंग अ रिस्क, डू एंश्योर टू टेक दिस 1s 2s and 3s whenever possible, and sixer तो हम मारेंगे ही ना यार जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। So this kind of trades that you are waiting for the market, waiting to market to correct and keep buying put options, tell me, I'm asking you, so many of you are here right now, how many of you have been buying put options every now and then? मार्केट गिरेगा, पुट ऑप्शन लेके रख दिया, मार्केट गिरेगा, पुट ऑप्शन लेके रख दिया। What has happened to your put option? Do you have a strategy? Do you have a method? Do you have a way to do it? That's why when you're dealing with options, which is a sophisticated instrument, you need to know how it functions. You need to know how it works. One such technique is this open interest profile. Are you with me? So look at the profile. Look what big players are doing. Why I am saying when you're looking at an open interest profile as a big player activity, if you have $1 million to deploy, will you bet on the probability of 25 to 30% or will you bet on the probability of 85%? Answer me. I want to make this interactive, guys, for every one of you. My question to you is, अगर आपके पास में $1 million है, say 1 CR, if you are risking 1 CR, will you be betting on 85% chance of you making money? Even if you make less, even if you make like 2% a month, even if you make like 25% a year, which is CAGR, अगर आप करोगे ना तो it's unbelievable compounding benefit, I'll tell you. You will bet on 85%, making that 24% a year, trying to do a CAGR out of it, 3 साल में पैसा double. That's what you will bet on when you have a big fund to deploy. You will not bet on your capital with entire these things. You will form some option strategies where the probability is still 70%, but definitely not buying a naked call option with so much of capital. You will not do that. So why don't we start thinking like a big player? अगर हमारे पास कैपिटल 1 लाख ही है, 2 लाख ही है, 5 लाख ही है, तो why not think like big players activity? And how do we go about that? So it's very important that you start thinking what they are doing. The first way of doing that is, let's see where is these
players creating positions. An open interest profile helps us to know that where these players are creating their positions, and that's open interest profile will help us to understand कि market का trend क्या है. हाँ, is it clear? So होता क्या है, जहां पर अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो नीचे का ओटीएम ऑप्शन का पुट बेच दो, क्योंकि मार्केट ओवरहीटेड है, ओवरबॉट है, आरएसआई 75 के ऊपर है, तो यार पुट बेच के एटलीस्ट मार्केट साइडवेज हो जाएगा. स्टॉप लॉस के साथ काम करना है दोस्तों. आई एम नेवर गोइंग टू टेल यू नॉट टू प्लेस अ स्टॉप लॉस. प्लेस अ स्टॉप लॉस, स्पेशली इफ यू आर ऑप्शन सेलिंग आल्सो और ऑप्शन बाइंग. एंड वंस यू नो दैट इफ this is RSI is overbought, I'm not having that conviction, but the market trend is up. Trend is your friend, right? So trade in the direction of the trend. If the trend is up, trade in the direction of the trend. Now that's the way you should approach market. That's why options become so much important. I will tell you a few things that you can do with options, since you are here, every one of you, and learning about options. What are those few things about options? Firstly, ऑप्शंस में अगर आपका व्यू स्ट्रांगली बुलिश है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो इन द मनी. नेवर सेल एंड आउट ऑफ द मनी, नेवर बाय एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन. फर्स्ट रूल, बिकॉज मैथमेटिक्स डज नॉट फेवर यू, not about anything else. The basic mathematics of option does not allow you to make money. If you are buying an out of the money option, you can still buy an at the money option, it is fine. But out of the money option or near expiry is the most common blunder traders do. Most common blunder, the reason I am saying is because you are buying out of the money option and you are buying near expiry option, the probability of you making money is 15% and less. 15, not 50, 15% and less. If you buy at the money option and far away expiry, 50-50 chances है आप पैसा बनाओगे या लॉस करोगे. Basic mathematics. If you buy in the money option, far away expiry, far away का मतलब है यार 2 वीक से ज्यादा दूर की expiry, there is a very high possibility of 60%. You can still make money as per the mathematics I'm talking about. But still that 60% does not happen because the trend. So 5 factors है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपके अगेंस्ट होते हैं. ब्लैक शोल्स मॉडल अगर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताता हूं. पहला होता है इंटरेस्ट रेट जो कि फिक्स है, तो वो फैक्टर को जाने दो. दूसरा होता है वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी अगर आपने ऑप्शन बाय किया और वोलेटिलिटी गिर रही है जैसे कि अभी के मार्केट में, you will not make money even if spot price बढ़ रहा है. The third is the trend. Trend should be in your favor, मतलब direction. It should be moving in your favor, नहीं तो आप फिर भी पैसा लॉस करोगे. The fourth and the most important aspect is time. People do not keep track of time and they do blunders. Option में थीटा जिसे कहते हैं, time is the most essential element that very few people understand. अगर टाइम को समझ लिया आपने ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ट्रेड करने का मजा ही अलग है. सो टाइम प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. सो थीटा समझना टाइम हो गया, बहुत जरूरी है. वोलेटिलिटी समझना जरूरी है, जिसे हम वेगा कहते हैं. इंटरेस्ट रेट को जाने दो. अंडरलाइंग प्राइस जो आपका चल रहा है विच इज ट्रेंड, वो इंपॉर्टेंट है. और साथ ही में आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस एक सिलेक्ट किए वो भी जरूरी है. तो ये बहुत सारे जो वेरिएबल्स है उसे समझ के अगर आप ट्रेड करोगे ना दोस्तों, तो पैसा ऑप्शन में बनता है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ओवरऑल परसेप्शन दैट हाउ डू यू लुक एट दीज थिंग्स. सो मार्केट का व्यू क्या है? द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू ड्रॉ अ चैनल, जो मैंने ट्वीट भी किया. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, इंश्योर यू फॉलो मी ऑन ट्विटर. माय ट्विटर लिंक विल बी शेयर्ड अक्रॉस बाय माय कलीग, एंड you need to ensure you are following. I have shared a channel yesterday on Nifty, और प्राइसेस उसी चैनल के हर्डल पे है, ट्रेंड लाइन के हर्डल पे. सो आई एम नॉट बेरिश बट आई एम कॉशियस. तो स्ट्रेटेजी बनती है ना, यू आर नॉट बेरिश बट यू आर कॉशियस.
which means you can still do something with options, like maybe you can sell a put option. एक तो ये हो गया. If you are strongly bullish, you can buy a call option. If you are bullish but with a specific set of target, you can buy a call and sell a call, which is known as covered call या वो strategy. If you are bullish but you don't want to risk anything much, कि यार नीचे जाए तो कुछ ना जाए, ऊपर जाए तो भी पैसा बने, ऊपर बहुत सारा जाएगा तो भी पैसा ज्यादा लॉस नहीं होगा, then do a ratio spread. Ratio spread मतलब होता है आपने एक लॉट लिया, 4 लॉट बेच दिया out of the money. So what I am trying to tell you is that there are so many ways in which you can deal with options. There are so many ways in which you can form these strategies. So ये सारी चीजें हैं options के बारे में, and I just wanted to talk about those things, and I think I've explained it to you. Are you guys interested in these kind of things? Every one of you. So overall view, लोग पूछ रहे कि भाई निफ्टी पे व्यू क्या है. निफ्टी पे व्यू फिलहाल तो है पॉजिटिव, लेकिन अगर निफ्टी यहां से, अभी मैं चलो व्यू की बात करते हैं, अभी बहुत देर तक ज्ञान ले लिया, समझ लिया, अभी मार्केट में करना क्या है यार वो तो बताओ. देखते हैं मार्केट में करना क्या. निफ्टी का सपोर्ट लेवल है ये, ओके, कौन सा लेवल है ये देखते हैं. निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल 19,560, मैंने मॉर्निंग में ट्वीट किया था, अगर आपने देखा हो. 19,560 अगर निफ्टी ब्रेक करता है, फॉलोड बाय दिस लेवल लो विच इज 19,400. क्यों? बिकॉज ये जो लेवल है ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट की है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है वेव थियरी वालों के लिए. दिस इज 0B ट्रेंड लाइन. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई तो पहला कंफर्मेशन, दूसरी ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई तो दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया. एंड उसी तरीके से ये हम देखते हैं. आज मैंने एक ट्वीट भी किया था टाइम के बारे में, अराउंड 11:30 के आसपास निफ्टी का एक टाइम साइकिल है. किसी ने देखा था वो ट्वीट? 11:30 के निफ्टी के बारे में एक ट्वीट किया था. देखते हैं निफ्टी का 11:30 के आसपास क्या फॉर्मेशन हुआ. देख रहे हैं 11:30 के आसपास निफ्टी ने ये लो बनाया, और इसके बाद से जो लो बना वहां से एटलीस्ट 70 पॉइंट्स का पुल बैक मिला. ओके, चला ना साइकिल ब्रिलियंटली. सो मेरे लिए क्रूशियल लेवल कौन सा है? आज का साइकिल लो विच इज 19,680, एंड साथ ही में 19,560. तो ये दो लेवल अगर ब्रीच करता है निफ्टी, देन वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. अगर ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, maybe there is a possibility we will retest the recent high of 19,860. Are you with me? Every one of you. And over here Salman is saying, sir, I'm your MOC student and Bollywood Bank KST. Today is the first day after 35 days I'm in loss. Okay, for the first time he lost today, and he has made profits in the last time. #time traders. Fantastic, Salman. You are doing exceptionally well. Thank you very much. So अभी निफ्टी के बारे में कल का व्यू मैं दूंगा आपको बाद में, वो मैं ट्विटर निफ्टी के बारे में व्यू तो मैंने दे दिया, एग्जैक्ट टाइम डेट मैं आपको कल सुबह दूंगा. एंड जो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल विल बी शेयर्ड अक्रॉस, सो यू कैन follow me there. Also, very important thing is that this webinar will be hosted on my app, Ashish Kyal Trading Gurukul app. So I'm going to share across my Ashish Kyal Trading Gurukul. ये वीडियो को मैं वहां पर पोस्ट करूंगा. So ensure that you go download that. उसमें मेनू में फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहां पर जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं, और फ्री मटेरियल सेक्शन. सो डू दैट गाइस. एंड जाते जाते बहुत क्विकली, डू यू वांट टू लर्न अबाउट, डू यू वांट टू बी विथ मी फॉर अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन learning this kind of strategies on options along with wave theory, option strategies, कैसे इसे यूज करना है, सारी चीजों को देखना है. तो एक मैंने पोल लॉन्च किया है दोस्तों, ये पोल में पार्टिसिपेट करो, so that
you can then do that, and you can register for this mentorship program also. The link will be shared across by my colleague. You can register for the mentorship program and you can do it now. So ये mentorship शुरू हो रहा है हमारा 27th of July से, where we will be 3 months together learning option trading using technical analysis. So mentorship में this part will be covered, and you can be a part of that. You can learn about wave theory. You can learn about all of those things, and so ensure you are taking care of your learnings, because if you learn, you will be able to make money. Any questions, guys? So I just shared across very quickly what I see on the market, and यहाँ पर आप बैंक निफ्टी पे देखना है आपको ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी का हम फ्राइडे करते हैं, so Friday at 4 पे करेंगे बैंक निफ्टी का। How much to invest for a college student? HEMA. If you are a, I'm not sure if you're a, HEMA is a name for men or women. Okay, if you are a college student, invest in knowledge is what I would say, rather than because you are starting very early. Learn and trade, because once you learn, you will do the right things first. If you just trade, you will do the wrong things first. So I would suggest invest in yourself, invest in knowledge, which is going to be with you for lifetime. That is more important than anything else. The link is shared across by my colleague. In case you want to be a part of this program, you can simply click on the link and register now for this program. Mr. Bibhuti is saying, sir, I started making profit only after attending your Master of Cycles. Superb teaching. Thank you, Bibhuti. Glad to know that. Yesterday time, I couldn't attend the time analysis. So guys, if you don't attend live, you miss it out, you miss it out. मेरा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर फ्री मेंबर सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे आपको मिल जाएगा. So this mentorship is going to be interesting, where we will cover options trading, we will cover about master of waves, we'll talk about cycles theory and step-by-step approach. We have already a private Telegram group there, and we are doing a lot of those things. We will talk about more strategies about this in the options trading. MOC ka revision session is happening tomorrow, guys. So whoever is the mentee for upcoming batch also will be a part of this exclusive invite. So we are conducting Master of Cycles follow-up session, which has been pending for some time, tomorrow. So sort of thanks for reminding. I will just notify everyone else also. It will be tomorrow, and you can raise your queries, doubts during the live session we are going to have exclusively for the mentees and Master of Cycle participants. So we will do that tomorrow. Awesome, guys. This NNB there for this program. You will love what we do in mentorship. It's simply awesome. And if you register today, you will be a part of tomorrow's exclusive invite also. And that's it from my side today. And love talking about options. Thank you very much for joining in. Ashish Kyal signing off. And again, a repeat, if you are watching this on my app, if you don't have it, then download the app and watch it on my app. And see you again for the exclusive webinar tomorrow, which is for the mentees and the Master of Cycle participants. Thank you. Have a wonderful time. Do follow me on Twitter. Do check out my YouTube page, and all of those things will make concepts very clear. Thank you.